Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So, this is lecture number 4 of unit number 4, and the name is Nuances and Modes of Speech Delivery. और ये हमारी यूनिट 4 है, प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स. इससे पहले हम यूनिट 4 के 3 सेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उनको जरूर देखें. And once again, guys, if you have not subscribed the channel yet, I request you to kindly subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I keep on posting over here. So I keep on posting the videos related to your communication skills, your soft skills, your personality development, your vocabulary, your spoken English. If you really want to establish yourself as a good communicator, or rather I should say an impactful communicator, make sure that you hit the bell icon and you keep on getting all the notifications related to all the videos. Okay, so without further ado, let's go ahead and start talking about our today's topic, which is nuances and modes of speech delivery. And yeah, let's go. Alright, so our today's topic is nuances of speech delivery, and today we'll be discussing about this topic. This is unit number 4, presentation and interaction skills. ये हमारा lecture number 4 है. This is the code BAS 105205 soft skills for AKTU students first year. And this is according to the very new syllabus which was recently released in November of 2022. So let's go ahead and start talking about our today's topic. तो हमारा जो topic है वो है आज का न्यूएंसेस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी. इससे पहले हम ये बाकी जो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलीवरी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो मेक श्योर कि आप इनको अपने तीनों लेक्चर्स में जरूर देखें. तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं एंड देन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द न्यूएंसेस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी. तो यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि स्पीच डिलीवरी अगर आप एक बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं पाइबॉक मॉडल. ये पाइबॉक मॉडल जो है बेसिकली किटी लॉकर और स्टीफन कैशमैरिक ने दिया था, और इस मॉडल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप अपनी स्पीच को बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं. ठीक है, तो यही मॉडल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. The PIBOK model is an instrumental tool for an effective communication, especially for speeches. अगर आप speeches में as a effective communicator आप वहाँ पे role play करना चाहते हैं, then make sure आप इस model को follow करें. This will definitely help you out in structuring your speech and in actually delivering your speech in a perfect order. PIBOK refers to the purpose, audience, information, benefit, objections and context. ये 6 की 6 चीजें जो है आपकी in 6 like factors को you need to remember, you need to keep in mind so that you can deliver an effective presentation. तो क्या क्या है ये? नंबर 1 इज द पर्पस, नंबर 2 इज द ऑडियंस, नंबर 3 इज द इंफॉर्मेशन, नंबर 4 बेनिफिट, नंबर 5 ऑब्जेक्शंस एंड नंबर 6 कॉन्टेक्स्ट. आइए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द एंटायर मॉडल. सो व्हाट इज द पर्पस? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर स्पीच. व्हाई डू यू वांट टू डिलीवर योर स्पीच? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, what is the purpose behind your speech? Why do you want to deliver it? It is for instructing, informing, demonstrating, negotiating, persuading, or just for entertaining audience. आपका basic objective क्या है? अगर आपके objective आपको बिल्कुल clear हैं, then your presentation will be or your speech will be very very impactful. But the objective is not clear, the speech will not be impactful. Okay? Knowing your purpose acts like a guiding light which helps you meeting your clearly laid down objectives and goals. आपका जो बेसिकली आपका पर्पस अगर आपको क्लियर है तो वो एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है जो आपकी प्रेजेंटेशन को या फिर जो आपकी स्पीच को एक बहुत ही डिजायरेबल एंड तक लेके जाता है. ओके, Number 2 is your audience. Know your audience. If you do not know your audience, you probably would not be able to craft an impactful message for them. Okay, what is the meaning of knowing your audience? Who is your target audience or recipient of the communication? किसको आप डिलीवर करना चाहते हैं? Having an insight into the target audience is cardinal for success or communication. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप छोटे बच्चों के लिए कोई स्पीच डिलीवर करना चाहते हैं, वहां पे आपकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, आपकी वोकैबुलरी भी डिफरेंट होगी, आपका मैसेज भी डिफरेंट होगा. लेकिन अगर उसी टॉपिक के ऊपर आप बिजनेस प्रोफेशनल्स को कोई लेक्चर देना चाहते हैं या कोई सेशन देना चाहते हैं, कोई स्पीच देना चाहते हैं, योर वोकैबुलरी, योर कम्युनिकेशन, द फॉर्मेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन, everything will be different. So you need to understand what is the geographical location of your audience, how educated they are, where they belong to, what is the age group, all these things, whether they are male, female, if they are having any specific society, any group, any affiliation, you need to understand that part. Okay, for successful completion you need to design your content as per the interest and understanding the need of your target audience. आपकी target audience की need आपको बिल्कुल clear होनी चाहिए. Number 3, information. Craft the meticulous message. जो भी मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं, that should be meticulous, that should be very precise, very accurate, and that should be very point to point. Okay, what do you actually want to deliver? डिलीवर क्या करना चाहते हो? क्राफ्ट योर मैसेज इन अ डायरेक्ट, क्लियर,
एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड मैसेज देने की कोशिश करोगे किसी को समझ में नहीं आएगा। अवॉइड फ्लावरी लैंग्वेज विद लिटरेरी टर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी एंड जार्गन्स। कोशिश कीजिएगा कि घुमा फिरा के जो बोली जाती हैं चिकनी चुपड़ी बातें उनको ना बोलें। लिटरेरी टर्म्स यूज करने की कोशिश ना करें। कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी जार्गन्स को रिड्यूस करने की कोशिश करें, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड यू। Easy to understand messages easily graspable bytes can certainly do wonders to your speech and can help you in achieving your objective. जो easy to understand message होता है और जिसको easily grasp किया जा सके, छोटे छोटे bytes में जब आप information देते हैं, people can easily understand you and people definitely like your speech. So make sure you do that. Number 4, benefits. What will your audience get? You are delivering your presentation, but what exactly will your audience get? Why should they listen to you? Is there anything which they can benefit from it? Right, so you need to understand about the benefits of your audience. Okay, why should your audience listen to you? What benefit will they get out of it? आपकी स्पीच सुनने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? Had you been in the audience, would you prefer to listen to yourself? अगर आप ऑडियंस में से एक होते तो क्या आप अपने आप को सुनना पसंद करते? क्यों सुनना पसंद करते? क्या रीजन होता उसका? This question will prompt you to keep your speech perfectly aligned with the needs, interest and expectation. और ये जब क्वेश्चन आप खुद से पूछेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या आपकी स्पीच ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड, उनकी जरूरत को पूरा कर रही है। अगर कर रही है, ओनली देन दे विल लिसन टू यू, अदरवाइज दे विल नॉट। ओके, देन नंबर 5 इज ऑब्जेक्शंस। व्हाट ऑब्जेक्शन कैन यू फेस? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कभी आप कुछ ना कुछ डिलीवर करते हैं या कुछ ना कोई अपना अपना विचार या अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, then there would be somebody or there would be some a group of people who will definitely go against you, or probably they will not have the same thoughts as you have. So in that case, what sort of questions you might face, what sort of objections you might face, you need to ask yourself and you need to prepare yourself for them. Okay, objections, arguments and contrary ideas are inevitable and are always the part of any speech. In any speech, no matter how meticulous you are, no matter how intelligent or brilliant you are, no matter how popular or successful you are, you will always face certain objections. One should always try to analyze what objections can be raised in one's speech and try to prepare proper solutions for them. If you already prepare for them, you will have no problem in handling them. Figuring out such expected issues is incredibly crucial. If you really want to become a very good speaker, then figuring out such unexpected or expected sort of outcomes or expected or unexpected sort of questions will definitely help you out. Okay, number 6 is the context. What is the context? What prompted you to deliver this speech? आप ये speech जो deliver कर रहे हैं, किस रीजन की वजह से कर रहे हैं? आपको किसने कहा? आप किसी ओकेजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से कर रहे हैं, या फिर किसी थीम की वजह से कर रहे हैं, या किसी देयर मे बी सम रीजन. पर्पस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट व्हाट इज द रीजन यू आर डूइंग इट? Okay, are you getting money for it? Are you doing it honorarily? Are you actually doing it for motivating somebody? Are you doing it for helping out, or you can say like making somebody laugh? There may be certain reasons. Okay, context refers to what is the relationship with the receiver. What exactly is the relationship with the receiver? Are you a teacher and a student? Are you a politician and a voter? So there will definitely be a relationship with the audience. Context can also relate to the morale in the organization, the economy, the time of the year and the special situation. You might be delivering some presentation at the time on the occasion of Labour's Day. You might be delivering a presentation on the occasion of Independence Day. So there may be different situations in the context. Keeping context in mind keep you aligned to the theme and saves you from distracting from the topic. अगर आप अपनी थीम से अलाइन रहना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं टॉपिक से, then keeping that context in mind is very, very important. Okay. Now, second topic is the modes of speech delivery. Always remember, if you really want to deliver any speech, there are 4 important methods which you can use to deliver your speech. Number 1, the memorization method, जिसमें आप चीजों को मेमोराइज करके बोलते हैं. Number 2, मैन्युस्क्रिप्ट मेथड, जिसमें आपने अपने कंटेंट को लिखा हुआ है और आप देख देख के पढ़ रहे हैं. Number 3 is extemporaneous मेथड, जिसमें आप अपने की आइडियाज या की पॉइंट्स को लिखते हैं और उसके बाद उनको एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं. एंड नंबर 4 इज द इम्प्रॉम्प्टू मेथड, जहां पे आपको टॉपिक बिल्कुल रैंडमली दिया जाता है, आपको कुछ आइडिया नहीं होता, आप नेचुरली अपने मन से सारी चीजें अपने दिमाग से बोलने की कोशिश करते हैं. इफ यू रियली वांट टू गेट अ इनसाइट और डीप यू कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स, प्लीज गो टू सेशन नंबर 2. सेशन नंबर 2 में हमने बेसिकली जो आपका प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन डिलीवरी के भी यही मेथड्स होते हैं, वहां पे इनको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है. तो मेक श्योर कि आप सेशन नंबर 2 जरूर देखें, जहां पे इन चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है. ओके, so that's it, my dear students. I hope that you understood each and everything. If there is anything which you would like to ask me, make sure that you
put it in the comment box or through the WhatsApp or the Telegram channel. Also, make sure that you subscribe the channel so that and also hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos. So please do comment, subscribe, and share. And also let me know if you want me to include something else. Thank you so much for reaching up to this point. See you in the next one. Have a good day ahead.